जब तक मम्मा ना बोले तब तक। Hello everyone. Good afternoon, beta. I hope you are fine and you are doing work properly. Okay. Now today we are starting, beta, our next class of the thermodynamics. In last class, beta, there was some problem due to some Wi-Fi connection. That's why today we are starting again our class of that topic, work done due to thermal and adiabatic process. Clear? So we discussed beta already. There are the four processes take place in form of your thermodynamics variable, pressure, volume and temperature. On behalf of these variables, we discussed already four processes here: adiabatic process, isothermal process, isochoric process and your isobaric process. Okay, so we will discuss today your work done due to these process. Here first one, your work done due to during our isothermal process, beta, during the isothermal process. And this one process, beta, can be expansion, can be compression. Okay, expansion will be there when work volume will be expand from here to there. Okay, for example, if we are doing their system and in this one beaker, beta, container, we are taking a gas and above this one we are taking their piston. क्या ये piston है? Okay, this one our piston. Then here work can be done on this one. Here two type, दो तरीके से इस पे वर्क हो सकता है. या तो क्या है, आपका सराउंडिंग वर्क कर सकता है. इफ सराउंडिंग विल बी वर्क फ्रॉम दी आउटसाइड, सराउंडिंग वर्क करेगा. सराउंडिंग और सिस्टम में डिस्कस. बेटा सिस्टम क्या होता है आपका, अंडर ऑब्जर्वेशन जो वाला पोर्शन होता है बाउंड्री के अंदर, दैट विल बी सिस्टम. और बाउंड्री से बाहर वाला जो भी पोर्शन होएगा, वी विल कॉल इट सराउंडिंग. जब सराउंडिंग इसके ऊपर वर्क करता है तो पिस्टन क्या हो जाता है, कंप्रेस होएगा. पिस्टन कंप्रेस होएगा, देन वॉल्यूम विल बी डिक्रीज देयर. ओके, सो चेंज इन वॉल्यूम, हाउ मच चेंज इन द वॉल्यूम, वॉल्यूम में जितना चेंज आता है दैट वी विल राइट देयर इन फॉर्म ऑफ द वर्क डन. ओके, सेम हियर फॉर द एक्सपेंशन. हम एक्सपेंशन कर रहे हैं, एक्सपेंशन के अंदर क्या होता है बेटा, वॉल्यूम इंक्रीज करेगा. वॉल्यूम कब इंक्रीज करेगा, जब सिस्टम इसके ऊपर वर्क करेगा. ओके, जब गैस पिस्टन के ऊपर वर्क करती है तो इनिशियल जो भी वॉल्यूम होता है, फॉर एग्जांपल इनिशियल वॉल्यूम इज V1 एज दिस वन सिस्टम. गैस क्या है, यहाँ पे हमारा सिस्टम है, तो गैस क्या है, इस पे वर्क करेगी, देन वॉल्यूम विल बी इंक्रीज. ओके, वॉल्यूम विल बी इंक्रीज, तो वॉल्यूम कितना इंक्रीमेंट होएगा, चेंज इन वॉल्यूम. लेट वी आर टेकिंग देयर V2. कितना चेंज हो रहा है, वॉल्यूम V2 चेंज हो रहा है. आफ्टर दिस वन वॉल्यूम विल बी चेंज V2. ओके, इनिशियल वॉल्यूम क्या था इसका, V1 था. गैस ने जैसे इसके ऊपर वर्क किया तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा. कितना इंक्रीज होगा, V2 इंक्रीज हो गया. सो ड्यूरिंग दिस वन वर्क डन बाय दिस सिस्टम, वॉल्यूम विल इंक्रीज. सो वॉल्यूम विल इंक्रीज, देन वर्क डन विल बी पॉजिटिव. क्या वर्क डन क्या रहेगा, पॉजिटिव. कब रहेगा, जब वॉल्यूम क्या हो रहा है, चेंज इन वॉल्यूम क्या कर रहा है, इंक्रीमेंट कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है. और कब इंक्रीज करेगा, जब गैस वर्क on the surrounding, system work on the surrounding. Okay, you can say system work done by the system, work done by system, work done by system. क्लियर, वर्क डन बाय द सिस्टम. जब सिस्टम वर्क करेगा तो वॉल्यूम एक्सपेंड होगा, वॉल्यूम एक्सपेंड होगा तो वर्क डन क्या रहेगा आपका, पॉजिटिव रहेगा. आई होप बेटा यू अंडरस्टूड प्रॉपर्ली कब वर्क डन आपका पॉजिटिव रहता है, कब नेगेटिव रहता है. इससे अपोजिट केस में जब सराउंडिंग वर्क करेगा, वॉल्यूम क्या करेगा, सराउंडिंग क्या करेगा, पिस्टन को कंप्रेस कर देगा, वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा. वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वर्क डन नेगेटिव हो जाएगा. तो नेगेटिव कब होगा आपका, जब work done by the surrounding, you can say work done on the system, on the system होगा, then work done will be your negative. By the system then work done will be positive. Okay, so this one graph for the expansion. इसमें initial क्या condition है कि initially हम लेके चल रहे pressure is P1 and your volume is V1. Then during the expansion जैसे ही हम work कर रहे हैं, work by the system हो रहा है, तो volume क्या कर रहा है, increase कर रहा है. initial volume V1 था, after some time volume will be V2. V2 volume increase होगा. That's why we will call this one process is your expansion process. अगर volume decrease हो जाएगा, okay, volume will be decrease, then process will be like this one, and this one process we will call it compression process.
Okay, so now we will solve this one, how we can find their work done during their isothermal process. तो isothermal process कौन सी होती है जिसके अंदर बेटा टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, that we will call it isothermal process. So we are considering their pressure and volume of the ideal gas change from this to this, कि इनिशियल जो प्रेशर वॉल्यूम क्या है वो हमारा क्या है P1 और V1 है. देन इनिशियली ऑफ दिस वन योर सिस्टम प्रेशर इज P1 एंड योर वॉल्यूम इज V1. देन आफ्टर द वर्क बाय द सिस्टम देन योर pressure becomes your P2, volume becomes V2, then volume will be increased their work done by the system. So now we are taking beta let 1 gram mole gas expand when work done by system, और सिस्टम कौन है यहाँ पे, गैस जो कंटेनर के अंदर हमने डाल रखी है. ओके, सो ड्यू टू शो वॉल्यूम इंक्रीज देयर, इंक्रीज फ्रॉम V1 to V2. कहां से, V1 से V2. That's why this process is known as your expansion process. This process is expansion. Okay, and work done will be positive. Due to this one, work done will be positive. Now we are taking their beta. Now small work done due to change in volume. क्लियर, कहां से कहां चेंज हो रहा है कि इनिशियली हमने क्या लिया था, एक बीकर लिया था बेटा, इनसाइड दिस वन वी आर टेकिंग देयर गैस, और यहाँ पे क्या हम पिस्टन यूज कर रहे हैं. तो अब क्या कर रही है गैस, इसके ऊपर वर्क कर रही है. तो इनिशियली वॉल्यूम क्या है V1 हम लेके चले थे, कि जैसे इसने गैस ने इस पे वर्क किया तो इसका वॉल्यूम क्या हो गया, इंक्रीज करके V2 वॉल्यूम हो गया. ओके, सो इंक्रीजिंग फ्रॉम दिस टू दिस, तो यहाँ से यहाँ तक जितना इंक्रीज हुआ, तो इनिशियली जैसे वॉल्यूम V1 था, वर्क डन हमारा क्या था, 0 था. जैसे ही वॉल्यूम इंक्रीज होके V2 हो गया तो वॉल्यूम क्या हो गया, इसका W वर्क हो गया. तो यहाँ पे हमने वर्क निकालना है कि इसके चेंज वॉल्यूम में कितना वर्क हो रहा है. दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग बेटा वर्क डन, एज वी नो दिस वन बेटा, स्मॉल वर्क डन इक्वल टू योर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. ये सबको पता है, yes or no, मैकेनिक्स में पढ़ के आए हम, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. सो यूजिंग दिस वन, इफ देयर फोर्स एंड दिस वन, फोर्स वी नो अबाउट दिस वन, as we know pressure equal to force per unit area. Yes or no? Then you can write their force equal to pressure into area. That's why here we are using their this one, your pressure into your area, your ds will be there, small displacement will be there. So area into small displacement कितना होगा, then we can write their change in volume. क्लियर, कि अगर इस कंटेनर का एरिया अगर A है तो इतना चेंज हो रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ds डिस्प्लेसमेंट विल बी टेक प्लेस. ओके, सो ds डिस्प्लेसमेंट विल बी देयर, देन हाउ मच चेंज इन वॉल्यूम, हियर dv change in volume. So pressure into dv we can write their small work done. So we can write better, we can solve this one, how we can solve, then work done will be equal to this one. So as we know about this one, as we know ideal gas equation for 1 mole of the gas, then n we can write there 1. Now we have considered na initially only for 1 mole. Okay, so that's why we can write there dw equal to your, first we are writing beta pv equal to your rt. So using this one p we can write there rt by volume. Here v is volume, there t is temperature and p is pressure, r is your constant. Now here this one first equation, this one here second equation. Now we are putting the value, put value of p in equation first. Okay, as we are putting this one, then dw we can write there rt by v, and this one will be dv. Okay, so rt you can take common constant only,
your work done came out dw rt by v dv, then rt we can write outside, then here left dv by volume. Okay, we have taken beta integration initially, we are writing this only. Now taking integration for total work done, taking integration for total work done. टोटल वर्क डन हम फाइंड करेंगे, कैसे फाइंड करते हैं, इंटीग्रेशन से. दैट्स व्हाई वी विल टेक बोथ साइड इंटीग्रेशन. नाउ RT dV बाय V, दोनों साइड हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन लगेंगे. अब हमें पता है इनिशियली क्या था, वॉल्यूम इज, तो वर्क डन हमारी एक्सपेंशन प्रोसेस हुई, तो वर्क डन क्या हुआ, टोटल वर्क डन W जब V1 था. As volume increase to done will be W only. Okay, so now after the taken integration, then here will be W RT as it is. Now here integration of 1 by V dV. अब हमें पता है कि 1 by V dV का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, log V. Okay, so now we are writing this one here, log V. Now V1 to V2. Clear? So as we are writing this one, then we can write there RT log, putting value this one final minus initial, like this one, final minus initial. So we have done beta one rule of the logarithm. logarithm जैसे आपने ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन किया, उसी तरह logarithm का एक फॉर्मूला आता है कि आपका अगर logarithm इस तरीके से given है, log a minus log b, that is property of logarithm. beta you have to learn this one, then it will be equal to log a by log b. क्या आपको लर्न करनी पड़ेगी logarithm की प्रॉपर्टी इन स्टार्टिंग ओनली. आई ऑलरेडी टोल्ड यू इन फर्स्ट यूनिट. देन इन मेजरमेंट बेटा, here log a minus log b, we can write there log a minus a by b, like this one. That's why this one property we will apply here. Now here we can write there ra log v2 by v1 after applied this one property. Okay, so this one here work done will be equal to this one. Now here we are writing there beta this one, we are converting this one in log 10, then we can write there 303 RT logarithm, then here base 10 v2 by v1. Okay, so now as we know, if you want to convert this one work done beta, this one is a work done in our isothermal process. इसमें हम फाइंड कर रहे थे, isothermal process के लिए हम फाइंड कर रहे थे. Now this one work done in form of the change in volume and temperature will be remain constant only. If you want to convert this one work done in form of the pressure, then we can write there, we know that PV equal to here RT. R is constant, टेम्परेचर ऑल्सो कॉन्स्टेंट. ओके, आइसोथर्मल में क्या कहता है, टेम्परेचर इज कॉन्स्टेंट ओनली. अगर टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है, टी ऑल्सो कॉन्स्टेंट है, देन दिस कंप्लीट फैक्टर विल बी कॉन्स्टेंट ओनली. ओके, सो फॉर द इनिशियल कंडीशन वी कैन राइट देयर P1 V1, एंड फॉर द change then we can write there P2 V2, and that is equal to your constant. Clear? So this one here we can write beta this one ratio, we can write here V2 by V1, and here we can write there P1 by P2. This one take this side V2 by V1, this one take this side P1 by P2. So this one ratio of V2 by V1 we can write there P1 by P2. That's why. So work done in form of the process pressure in isothermal process we can write there beta, that is equal to here W equal to work done 303 RT log 10 P1 P2. Here we are writing this one ratio P1 P2. Okay, after this one your work done will be equal to this. Okay, this is the work done in our isothermal process in form of the pressure, and this one is a work done in form of the volume. Okay, so like this one we can find better work done in our isothermal. Again I am telling you how we can solve this one. Now
Initially beta, how we can find this one? We are taking there a system of the gas. Okay, as we are increasing our gas, then volume will be increased. Gas work करेगी इसके ऊपर, work करेगी तो volume क्या करेगा? Increase करेगा from V1 to V2. Okay, so pressure will be, initially we are taking P1, volume V1, then finally after the expansion P2, V2 volume will be there. Okay, then here we are taking 1 gram mole of the gas, expanding, work done by the system, then here volume will be increased from the V1, V2. Okay, that's why process will be your expansion only. Now after this one, we will solve their small work done due to change in the volume. We will find a bit of work done. We know about this one, force into your displacement. Force into your displacement. Force into your displacement. Then here displacement we can write there beta by using this one, pressure equal to force upon area. Then force we can write there pressure into area. So here area into displacement we can write there change in volume. Then work done we can write there pressure into change in volume, N equal to your 1. Then PV equal to RT, that is ideal gas equation. Then from this one we will find value of P, then put here, then work done will be RTV by dV. Then after this one, for total work done, then we will take integration from initial to final value. Initially our volume is V1, then work done will be 0. Volume is V2, then work done will be W there. Okay, then take their integration of the, after the integration, then we will write their RT log V2 minus V1 final minus initial, then RT log V2 by V1. Like this one, we will find beta, change this one in form of the pressure, then we can write there our work done will be this one. Then this beta condition of the isothermal, now that system should be completely conducting. Okay, name in isothermal process, in isothermal process इसकी condition क्या होती है बेटा, that our system should be, wall of system should be conducting. Okay, that is heat can be exchanged from system to surrounding and surrounding to system, vice versa. कोई भी सिस्टम है उसको हम आइसोथर्मल कब कह सकते हैं, वॉल क्या होगी उसकी कंडक्टिंग होगी, हीट कैन बी एक्सचेंज देयर. ओके, एंड इन दैट केस योर process of exchanging heat should be slow. ओके, डिफरेंस होता है बेटा आइडियाबैटिक और आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर. जो आइसोथर्मल के अंदर जो प्रोसेस, आइडियाबैटिक की जो प्रोसेस होती है वो बहुत फास्ट होती है और आइसोथर्मल की जो प्रोसेस होती है वो बहुत ही स्लो होती है. सो दैट स्लो प्रोसेस विल बी देयर, देन वी विल कॉल इट आइसोथर्मल. एंड वॉल शुड बी योर कंडक्टिंग, दैट इजीली कैन बी, हीट कैन बी एक्सचेंज बट एट द कांस्टेंट टेम्परेचर, देन वी विल कॉल इट दैट प्रोसेस शुड बी योर आइसोथर्मल प्रोसेस. ओके, वर्क डन ऑलरेडी वी हैव सॉल्व्ड. एंड थर्ड योर work done in isothermal process, that will be 303 RT log 10, then it will be your P1 by P2, otherwise in form of the volume we can say RT log 10 V2 by V1. This is the result of our isothermal process. I hope you can understood beta this one complete isothermal process, how we can find their work done and what are the conditions for the isothermal. Now we will discuss some question related with this one. Then here our beta first one question, then release of the air, then from the pneumatic टायर इज एग्जाम्पल ऑफ. ये कह रहा है कि अगर एकदम से टायर से अगर हवा निकल जाती है तो वो ऐसी प्रोसेस होगी, दैट विल बी आइसोथर्मल और आइडियाबैटिक प्रोसेस. तो आपकी आइसोथर्मल और आइडियाबैटिक
that will be fast exchange. बेटा टायर से हवा निकलना क्या है, एक स्लो प्रोसेस, एक फास्ट प्रोसेस है. नाउ ओनली आई डिस्कस्ड, बेटा अभी बताया था मैंने, जो स्लो प्रोसेस होती है वो क्या होती है, आइसोथर्मल प्रोसेस होती है, और जो फास्ट प्रोसेस होती है वो कैसी होती है, आइडियाबैटिक. तो कह रहे टायर से हवा निकलना, एयर निकलना, रिलीज होना, दैट विल बी विच वन प्रोसेस, एग्जांपल ऑफ विच प्रोसेस. सो दिस वन विल बी adiabatic process, not your isothermal process. Okay, now next one question, if in this one process work done due to the change in the net heat content in the system, ये कह रहा है कि कौन सी प्रोसेस है, ऑप्शंस आर आइसोथर्मल एंड आइडियाबैटिक. यहाँ ऑप्शंस क्या गिवन आपको, आइसोथर्मल और आइडियाबैटिक ऑप्शन गिवन है. तो ये कह रहा है इन दोनों प्रोसेस में से कौन सी प्रोसेस है जिसमें वर्क होता है हीट के एक्सचेंज से. ओके, तो हमें पता है कि आइडियाबैटिक प्रोसेस तो वो होती है जिसके अंदर हीट का एक्सचेंज ही नहीं होता. ओके, चेंज इन हीट क्या रहती है आपकी, जीरो रहती है, हीट कांस्टेंट रहती है. बट आइसोथर्मल में क्या होता है, टेम्परेचर विल बी रिमेन कांस्टेंट, हीट कैन बी एक्सचेंज योर सिस्टम टू सराउंडिंग एंड सराउंडिंग टू द सिस्टम. तो ये क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन सी प्रोसेस होगी जिसके अंदर क्या हो रहा है, वर्क डन हो रहा है बट ड्यू टू द एक्सचेंज ऑफ द हीट. Okay, so your which one is the right option, first one is the right option. इसके अंदर बेटा वर्क डन होता है ड्यू टू at the constant temperature, work done will be at constant temperature, and in this one your work done will be at constant heat. Okay, Q we will use for this one heat. This one is the symbol of heat. तो heat constant रहेगी, that will be isothermal process. Okay. Next one question beta C, for the adiabatic process to take place then the system should be. ये कह रहा है कि आइडियाबैटिक प्रोसेस होती है उसके अंदर सिस्टम कैसा होना चाहिए. अभी हमने आइसोथर्मल का डिस्कस किया, सिस्टम कैसा होना चाहिए आपका, कंप्लीटली कंडक्टिंग होना चाहिए. कंडक्टिंग किस लिए, कि कंडक्ट कर सके, हीट कैन बी एक्सचेंज फ्रॉम आवर सिस्टम टू सराउंडिंग, सराउंडिंग टू सिस्टम, दैट्स व्हाई वॉल्यूम विल बी चेंज देयर, V2 V1 to V2 and V2 1. Okay, can be there two process, expansion and the compression due to change in the volume. तो क्वेश्चन में कह रहा है कि इसके अंदर क्या होना चाहिए, सिस्टम आपका आइडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर क्या होना चाहिए. अब हमने अभी डिस्कस किया था आइडियाबैटिक प्रोसेस वो प्रोसेस होती है इसके अंदर क्या होता है, हीट कांस्टेंट रहती है. हीट क्या रहेगी, रिमेन कांस्टेंट. तो कांस्टेंट हीट रहेगी तो मतलब क्या है, हीट का एक्सचेंज ही नहीं होगा. अगर हम कोई भी सिस्टम ले रहे हैं, यहाँ से क्या पिस्टन है बेटा, इसके अंदर क्या है, हीट कांस्टेंट है, हीट क्या है, कांस्टेंट रहे. तो कांस्टेंट कब रहेगी, जब ये वाल्व क्या होगी, कंप्लीटली इंसुलेटेड होगी, तो यहाँ से कोई हीट का एक्सचेंज ही नहीं हो पाएगा. Okay, so this valve will be completely insulating, then we can say heat neither be exchanged from here to there. We can say for example glass flask, आपकी वाटर बोतल होती है जिनके अंदर अगर गर्म पानी डाल दो तो गर्म ही रहेगा. ओके, उसका रीजन क्या होता है कि उसकी कंप्लीटली जो वॉल है वो इंसुलेटिंग है, आइडियाबैटिक वॉल है, जिसकी वजह से हीट आपकी पास नहीं होगी, अंदर से बाहर, बाहर से अंदर. अंडर ऑब्जर्वेशन जो पोर्शन रखा हमने वो गर्म पानी हो, क्या हम उसको कह सकते हैं सिस्टम, और बोतल से बाहर वाला जो पोर्शन है दैट वी विल कॉल इट सराउंडिंग. ओके, सो यहाँ पे ऑप्शन क्या रहेगा बेटा, दैट विल बी योर आइडियाबैटिक के लिए हम क्या यूज करेंगे, परफेक्टली इंसुलेटिंग. कैसी होनी चाहिए, इंसुलेटिंग वॉल होनी चाहिए चारों तरफ, जिसकी वजह से क्या उसके हीट एक्सचेंज ना हो सके. ओके, अगर इसी क्वेश्चन में ये होता है कि फॉर दी आइसोथर्मल प्रोसेस दैट सिस्टम शुड बी, बट आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए सिस्टम क्या होना चाहिए, तो इसके लिए सिस्टम कैसा होना चाहिए, परफेक्टली कंडक्टिंग. किस चीज के लिए, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, कि हीट का एक्सचेंज होता रहे. ओके, so now our next last one question beta, in adiabatic process transformation is, ये कह रहा है आइडियाबैटिक के अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जो चेंज होता है, वो कैसा होता है, वो स्लो होता है, फास्ट होता है, या फिर जीरो होता है, या नन ऑफ दीज होता है. विच वन ऑप्शन विल बी राइट देयर आउट ऑफ दीज ऑप्शन. अभी हमने आइसोथर्मल का वर्क डन किया था, उसके अंदर डिस्कस किया था कि आइसोथर्मल की जो प्रोसेस होती है बेटा बहुत स्लो होती है. ओके, बट अपोजिट ऑफ दिस वन आइडियाबैटिक प्रोसेस दैट विल बी फास्ट. वो कैसी होती है, बहुत ही फास्ट होती है. तो यहाँ पे विच वन ऑप्शन विल बी राइट, दैट इज दिस वन ऑप्शन विल बी राइट, दैट प्रोसेस ऑफ द आइडियाबैटिक चेंज इट विल बी आवर फास्ट प्रोसेस, देन इट विल बी स्ट्रिक्टली फास्ट. Okay, I hope beta you understood these question and you can how we can find their work done in case of the isothermal process. Now next one beta we will discuss there how we can find their work done for the adiabatic process.
Before this one, we are finding beta work done in your isochoric process. Work done in your isochoric process. Isochoric process. क्लियर? आइडियाबैटिक का वर्क हमने फाइंड किया. ओके, नाउ वी विल फाइंड देयर आइसोकोरिक. आइसोकोरिक प्रोसेस वो होती है बेटा जिसके अंदर वॉल्यूम क्या रहता है आपका कांस्टेंट रहता है. क्या रहता है? वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है. देन व्हाट विल बी वर्क डन ड्यूरिंग दिस वन? तो अभी वर्क डन हमने फाइंड किया था, दैट इज प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम. आई होप यू अंडरस्टूड बेटा हाउ वी आर राइटिंग देयर वर्क डन इन फॉर्म ऑफ द प्रेशर एंड वॉल्यूम बाय यूजिंग देयर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. So pressure and volume we are writing their change in volume there is dV. Then if you will take their change in volume, ये कह रहा है कि आइसोकोरिक के अंदर क्या होता है? कांस्टेंट रहता है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? हमेशा जीरो होता है. इफ V इक्वल टू योर जीरो, V इक्वल टू योर कांस्टेंट, सो चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा आपका? जीरो. चेंज ही नहीं हो रहा, कांस्टेंट हो गया ना इस प्रोसेस के अंदर, वॉल्यूम का कोई चेंज ही नहीं हुआ, तो V कांस्टेंट हुआ तो चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा आपका? कांस्टेंट हो गया. वेट अ मिनट, हियर अगेन वी आर राइटिंग दिस वन here, V is equal to constant, then dV equal to our zero. Okay, change in volume here zero. So work done equal to your P and dV equal to zero, that's why it will become equal to zero. So we can write there work done in isochoric process will be zero because volume का change नहीं होता, then this one will be equal to zero. Okay, so next your work done in your fourth one process, isobaric process क्या कहती है कि change in pressure will be constant. ओके, आइसोबारिक के अंदर क्या रहता है? प्रेशर कांस्टेंट रहती है, बाकी चीजें चेंज होती रहती हैं. सो वर्क डन वी कैन राइट देयर P dV. वॉल्यूम कैन बी चेंज बट प्रेशर विल बी कांस्टेंट ओनली. तो कांस्टेंट बेटा कांस्टेंट को हम एज इट इज रख सकते हैं यार, इट विल बी नॉट जीरो ना, बिकॉज ऑलरेडी हियर प्रेशर ओनली, नॉट चेंज इन प्रेशर. ओके, दैट्स व्हाई दिस वन वी कैन राइट देयर वर्क डन इक्वल टू हियर PV ओनली, दैट इज इन आइसोबारिक प्रोसेस. So we discussed beta 4 work done in your, I am telling you again, then work done in first one your isothermal process, that is your W equal to your 2.303 RT log V2 by V1. Now second your isochoric process, then their work done will be equal to zero. Then third isobaric process work done will be equal to PV. Now fourth will become that fourth will be which one here? Sorry, adiabatic. Fourth will be here come adiabatic process. Adiabatic process here work done will beta we will find in our next class. How we can find their work done? There we will use their another factor in your isothermal here, PV gamma equal to constant. We discussed now already this one PV gamma कि adiabatic के अंदर क्या आता है बेटा? एक एक्स्ट्रा फैक्टर आता है गामा. गामा क्या होता है? रेशियो ऑफ योर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर टू द कांस्टेंट वॉल्यूम. Okay, so this one factor we will use, then there find their work done. I hope beta you understood. Thank you for watching today our class.